Good morning, everyone. Now, question number 3. Abba, Baba, and Chacha. Are we ready with the sheets? Fast. Remember, we were on to revision of retirement and death of a partner. तो retirement and death के sheets पर आइए. Cameras have to be on compulsorily, you know that. I will not remind you any further. I will just put you out. Kick you out of the lecture now. Ready? Question 3. Retirement or death of a partner. Question number 3. Chalo. Good morning, everyone. Good morning once again. Question 3. Abba, Baba, and Chacha were partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5:4. And the balance sheet as on 31st March 2010 was as follows. इससे पहले, tell me what accounts do we prepare in this chapter? Revaluation, partners capital, goodwill, cash bank account. 4 accounts. Plus we prepare the new balance sheet after retirement or death. अब उसमें से पूछा नहीं पूछा कितना बनाने का है वो we will decide. Now, कैश भी दिया है बैंक भी दिया है. We can prepare any one. Last time भी ऐसा ही कुछ था, I think, in one of the questions. और हमने क्या किया था? कैश बनाया था कि बैंक? एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैश भी था बैंक भी था. हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया था, हमने डायरेक्टली बैंक अकाउंट बनाया था. We can do any one. कैश अकाउंट बनाओ या तो बैंक अकाउंट बनाओ, दूसरा सीधा बैलेंस शीट में भेज दो. Now what are we doing here is we will see what are they asked. बट यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड में ये नहीं बताया कि कैश अकाउंट बनाने का है कि बैंक अकाउंट बनाने का. तो इट इज आवर चॉइस. वी कैन डू एनी वन. तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे. वो भी देखते हैं जरूरत है कि नहीं है. सो कैश डायरेक्टली न्यू बैलेंस शीट असेट साइड. ठीक है. बैंक we will prepare bank account. There you will show this as opening balance. Asset है तो डेबिट साइड. बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इनमें से किसी का भी अकाउंट बन रहा है. आर वी गोइंग टू प्रिपेयर एनी ऑफ दीज अकाउंट्स? आर वी गोइंग टू प्रिपेयर एनी ऑफ दीज अकाउंट्स? No. So then directly what? डायरेक्टली इनको कहां भेजेंगे? आंसर फास्ट.
New balance sheet. Next, now come to the liability side. Bills payable, creditors, loan. Are we going to prepare any of these accounts? Answer fast, Ray. Are we going to prepare any of these accounts? No. Then we will shift all these directly to where? New balance sheet, liability side. General reserve represents what? What does general reserve represent? It represents what? Past undistributed losses या profit? Profit. और क्योंकि ये past का profit है, it should be distributed to which partners in which ratio? Past profit है, तो it should be distributed in which ratio? It should be distributed in old ratio. Past का profit है ना, तो it should be distributed in old ratio. तो ये पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे लायबिलिटी, सो विच साइड? क्रेडिट साइड एंड ओल्ड रेशियो. And then capitals. Are we going to prepare capital account? Yes, we are going to prepare capital account. So there you will show this as opening balance. Liability है तो which side? Credit side. कुछ लोगों को अभी तक समझा नहीं है कि कैमरा ऑन का मतलब क्या होता है, तो ठीक है. बाय बाय. Now, Chacha died on 1st July 2010. Guys, listen. बैलेंस शीट की डेट क्या थी? ध्यान दो. बैलेंस शीट डेट वाज व्हाट? 31st March 10. And Chacha has died on 1st July 10. Immediately after balance sheet, he has not died. Yes? Balance sheet date was 30. Ishwar, you need to be here. Everyone needs to be here. खेलना बंद करो कैमरे से और इधर ध्यान दो. बैलेंस शीट की तारीख है 31st March 2010 और चाचा has died on 1st July 2010. तो बैलेंस शीट के बाद how many months he was still alive? बैलेंस शीट के बाद कितने महीने तक he was still alive? बैलेंस शीट के बाद हाउ मेनी मंथ्स ही वाज स्टिल अलाइव? लोग आफ्टर 31st March कम्स अप्रैल, मई, जून. जुलाई के तो वेरी फर्स्ट डे ही हैज डाइड, तो जुलाई कैसे गिनेंगे? फुल जुलाई वो जिंदा था क्या? नहीं, वेरी फर्स्ट डे. सो 3 months. So after the balance sheet for 3 months Chacha was alive. Remember this.
तो डोंट यू थिंक इन 3 महीने में बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें चाचा को भी देना पड़ेगा? बैलेंस शीट के बाद 3 मंथ्स तक तो ही वॉज अलाइव, राइट? 3 महीने तक तो जिंदा था, उसके बाद मर गए. आफ्टर दैट ही हैज डाइड. यस और नो? आफ्टर बैलेंस शीट फॉर 3 months चाचा वॉज अलाइव, देन ही डाइड. So in these 3 months, he was still a partner when he was alive. So whatever business has made profit in those 3 months, Chacha has to be paid for that also. Okay. Now, goodwill is valued at 3 times the average profit of the last how many years? 3 times the average profit of last 5 years, which were ऐसा करके 5 साल का प्रॉफिट दिया है. ठीक है. Then Chacha's share of profit up to the date of his death should be calculated on the basis of the average of the last 2 years profits. चाचा का वो 3 months जिंदा था तब का प्रॉफिट देना है ना हमको उसको. That will be based on the last 2 years average profit. फिर फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग आर रिवैल्यूड. ठीक है, फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड. Chacha will get salary of 3750 per month. Chacha will get salary. अभी चाचा was alive only for 3 months. तो उन 3 months का per month 3750 के लिए he will be getting salary. Then interest on capital is to be allowed 12% per annum. ठीक है, capital पे 12% per annum interest भी मिलेगा, but 3 months का, because he was alive only for 3 months. And Chacha's drawings from 1st April 10 to his date of death was 3624 per month. भाई साहब वो जिंदा था तो घर पे भी लेके जाता था, ड्राइंग्स भी किया है उसने. ठीक है. Now we are required to prepare only Chacha's capital account. No other account they have asked me. Only Chacha's capital account, showing how much will be paid to his executor. Also, we have to prepare, you have to give the workings of his share of profit and his share of goodwill. ठीक है. Now, though they have asked me only one account, Chacha's capital account, I will still have to prepare revaluation account. Because if you remember, revaluation profit or loss has to be distributed to all partners in the old ratio. तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो सबको बांटना है ना, और सबको बांटना है तो चाचा को अकाउंट में भी तो जाएगा. तो चाचा का अकाउंट अपने को बनाने का है, तो उसमें रिवैल्यूएशन से कितना अमाउंट आएगा उसके लिए हमको अकाउंट बनाने का है. Those who cannot switch on the camera now should not come now. They should come in the lecture when they can start the camera, because they have not taken any permission beforehand. And if your camera is on but your face is not visible, that is useless. You still have to go out. Come in when you are ready, and I'm going to lock the meeting in 2-3 minutes. Anyways, so I was saying कि revaluation account has to be prepared even though they have not asked, because at the end, whatever is the profit or loss on revaluation, when you will distribute that profit, Chacha's account also will be affected, and we have to prepare Chacha's capital account.
ठीक है। Now, everybody, listen. Goodwill of the firm, क्वेश्चन में क्या लिखा है? Goodwill of the firm is 3 times. क्या लिखा है पहले देख, देखने बोला तो लिखता है। अरे सूरज, यू आर नॉट सपोज टू राइट। नाउ लुक हियर, गुडविल, मैं जो बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट करो यार, तुम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इज दिस द वे रिवीजन इज डन? विजन तो है नहीं और रिवीजन में बैठ गए। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 times the average profit of last 5 years. 3 times. 3 times मतलब multiply by 3. What to be multiplied by 3? Average profit of last 5 years, है ना? तो goodwill is 3 times the average profit of last 5 years. Now 3 times लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। और है ना, 0.1 देखो, सब लोग 0.1 देखो, उसमें लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया है। 52,000, 47,000, 60,000, 56,000, 60,000, 52,000, 47,000, 60,000, 56,000, 60,000। ये कितने साल का प्रॉफिट है प्राणियों? 5 साल का। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, ठीक है? सो डिवाइड बाय 5. So 3 into, now total of these, जल्दी, अरे टोटल करने का कोई स्टार्ट भी नहीं कर रहा है, बसलेत मजेत। 2,75,000 आई थिंक।
Yes. So 3 into 2,75,000 divided by 5. गुडविल इतना आया, बट दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म. मतलब ये तो फर्म का गुडविल है, बिजनेस का गुडविल है. चाचा को पूरा गुडविल देने का है कि सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल देने का है? Obviously he will be given only his share of goodwill. Chacha's share of goodwill. Now look here, Abba, Baba and Chacha, and Chacha's share of goodwill is how much? 754. 7 plus 5 plus 4 is 16. उसमें चाचा का 4 है. 4 out of 16. तो whatever is the value of goodwill, 1,65,000 into 4 out of 16. 41,250. ये हुआ चाचा शेयर ऑफ गुडविल. नाउ Chacha's share of profit. Listen carefully. Chacha's share of profit. Look, after the balance sheet, he has not died immediately. He died on 1st July. That is 3 months after the balance sheet. And if he was alive for 3 months after the balance sheet के बाद 3 महीने तक अगर वो जिंदा था, ठीक है, तो इन दोज 3 months जो भी प्रॉफिट हुआ, इन दोज 3 months जो भी प्रॉफिट हुआ, Chacha also should get his share, because after balance sheet for 3 months Chacha was alive, then he died. So in those 3 months, whatever profit business has made, Chacha also has to be given his share. Yes. And now see the second point, that share is to be calculated based on the average profit of the last 2 years. Now last 2 years का profit ये रहा, देखो last के 2 साल 56,000 and 60,000. So it should be based on the average profit of last 2 years. Correct? ऐसा लिखा है ना, 56,000 and 60,000. So average profit of last 2 years, 56,000 plus 60,000. And because ये 2 years का average निकालना है, तो divide by 2. तो you will get 58,000. Now 58,000 तो yearly average है. अपने को year का चाहिए कि 3 months का चाहिए? We want year का profits or 3 months profit. Chacha was alive only for 3 months. So profit for 3 months. So 58,000 into 3 by 12. 14,500. Now ये 14,500 3 months का चाचा का प्रॉफिट है कि 3 months का बिजनेस का प्रॉफिट है? Yes, this 14,500 is 3 months profit of चाचा और 3 months profit of the business. तो उसमें चाचा's share 14,500 into 4 by 16. ठीक है? Now we are supposed to prepare only Chacha's capital account, nothing else. ऐसा उन्होंने बोला है, we have prepared a revaluation account also. Now listen, look, cash
directly new balance sheet. Bank opening balance in bank account, but we have not prepared bank account. They have not told us to prepare. Then bills receivable, data, stock, machinery, furniture, building. All these are directly going to the new balance sheet. They have not told me to prepare a new balance sheet. Forget it. ठीक है. उसके बाद क्या करने का? उसके बाद कुछ लोगों को निकाल देने का. कैमरा ऑफ हो गया था. सिंपल, निकाल दिया. Yes. Now liability side, bills payable, creditors and loan. These will directly go to the new balance sheet. We have not prepared the new balance sheet. They are not asked us. Now general reserve 96,000 we have to show on the credit side of capital account in the old ratio. And one of the partners का मैं capital account बनाया है. तो उधर मैं उसका general reserve डाल देता है. Correct. 96,000 का 4/16. 24,000. एक्चुअली तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो अगर आपने तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया होता तो देयर यू वुड हैव सीन इट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द थ्री. बट सिंस यू हैव प्रिपेयर्ड ओनली चाचा's कैपिटल अकाउंट, you are seeing only his share being distributed. No, actually we are distributing to all the partners in the old ratio. So if we would have prepared the entire partners capital account of all three partners together, so you would have seen there's 96,000 being distributed to all. Don't write. Resto. You would have seen this to be written in all the three, but because आपने सिर्फ चाचा का कैपिटल अकाउंट बनाया है, इसलिए आपको सिर्फ चाचा का कैपिटल दिख में डिस्ट्रीब्यूट किया दिख रहा है. Understood? Next, after that we have capital accounts of all the partners. Now we have prepared only chacha's capital, so we will show opening balance in only chacha's capital account, and that is 75,000. Opening balance has to come in the first line, so I had left the first line. ठीक है. Now goodwill जो है, look, chacha's died. Now for so many years even chacha was doing the business with other partners. Along with other partners, they were all doing it together. So whatever business has created goodwill in the market में जो नाम कमाया है, उसमें चाचा has also contributed. Yes or no? Yes or no? Yes. और अगर चाचा ने भी मेहनत किया है तो फिर he should get his share of goodwill. तो हमको उसको उसके हिस्से का goodwill देने का है. देने का है तो चाचा becomes creditor, and when a person becomes creditor, उसको credit. See the working note. How much is chacha's share of goodwill? 41,250. Then second, चाचा 3 months के लिए alive था, उसके बाद ही died. So उन 3 months में whatever is the profit, हमको वो भी उसको देने का है. उसको उसका शेयर देने का है, which we have calculated here 3625, and हमको उसको देने का है तो he becomes creditor, तो उसको credit. Now उसको credit तो कर दिया मैंने चाचा को, but debit क्या करूं? Anyone?
ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट कौन सी दो जगह पर होता है? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ नेट प्रॉफिट? फाइनल अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट दो जगह पर कहां लिखते हैं? यस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे दिखता है, लास्ट में नेट प्रॉफिट, और कैपिटल में क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। नेट प्रॉफिट का टू प्लेसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। करेक्ट। फाइनल अकाउंट्स बनाया है ना, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे लास्ट में मिलता है, और वो कैपिटल में हम क्रेडिट पे डालते हैं। तो कैपिटल चाचा का कैपिटल में क्रेडिट पे तो डाल दिया, बट प्रॉब्लम इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में मैं कैसे डालूं? प्रॉफिट एंड नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे डालते हैं, बट द प्रॉब्लम इज भाई साहब जो हैं, in between the year he has died, and in between the year you don't prepare final accounts. So in between the year you will not prepare profit and loss account. So temporarily, instead of profit and loss account, you will write profit and loss suspense account. Understood? Temporarily, instead of profit and loss account, because in between the year profit and loss account is not prepared. Correct? So temporarily, instead of profit and loss account, we have to write profit and loss suspense account. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। फर्नीचर का न्यू वैल्यू इज गिवन 41,800। व्हाट वाज द ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर? 42,100। ऊपर बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 42,100, न्यू वैल्यू इज 41,800। तो वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? डिक्रीज। एसेट वैल्यू डिक्रीज तो प्रॉफिट है कि लॉस? एसेट वैल्यू डिक्रीज तो इट्स अ लॉस, एंड लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। From 42,100, the value has become 41,800. So value decreased by 300. Yes? Fine. What next? उसी पॉइंट में फर्नीचर का ऑल्सो न्यू वैल्यू, मशीन के न्यू वैल्यू इज गिवन। And the new value of machine is 85,000. Everybody on the screen. Now old value was 86,800. And new value is 85,000. Again value decreases, और value कम हो गया तो it's a loss. एसेट का वैल्यू कम हो गया, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। 86,800 was the old value, new value is only 85,000. 1,800 value decrease. And now building का new value is 244,700 and old value was 230,600. New value is more, so value is increasing. Asset value increases, it's a profit to revaluation credit. New value is 244,700, old value was only 230,600. How much value has increased? 14,100, I think. Next, Chacha will get salary. Acha, tell me, from business point of view, we have to take salary from Chacha, we have to give salary to Chacha. We have to give salary to Chacha. हमको चाचा को सैलरी देने का है, तो चाचा becomes creditor, तो उसको क्रेडिट। एक मिनट, हाँ, कितना? 3,750 per month into how many months? How many months he was alive? 3 months. Now the point is, what is the second effect of salary to partner? Final accounts याद करो.
What is the second effect of salary to partner? एक capital credit. What was the second effect? अगर एडजस्टमेंट में बोलते थे पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, तो दो इफेक्ट क्या होता था? यस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. नाउ पार्टनर चाचा का कैपिटल क्रेडिट तो कर दिया मैंने, बट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करने का होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस साल के बीच में बनता नहीं है. तो उसके बदले वी विल हैव टू राइट व्हाट? इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल हैव टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. देन interest also is to be allowed to the partner 12% per annum on capital. We have to give interest to the partner. देने का है तो partner becomes creditor, and when a person becomes creditor, credit. Wait. Now what was his capital? Look here, 75,000. And on 75,000, 12% for how many months? For 3 months. ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 2250. अगेन फाइनल अकाउंट्स याद करो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या थे? हेलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या थे? हम लोग ऐसा सोचते थे, इफ यू रिमेंबर, कि पार्टनर को इंटरेस्ट पे करने का है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और हमको उसको देने का है, ही बिकम्स क्रेडिटर, इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट. तो पीएनएल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. नाउ कैपिटल चाचा का मैंने क्रेडिट कर दिया, बट पीएनएल डेबिट नहीं कर पाऊंगा. व्हाई? बिकॉज साल के बीच में पीएनएल अकाउंट नहीं बनता है, इसलिए टेम्पररीली आई विल हैव टू राइट व्हाट? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट, चाचा's drawings from 1st April till the time he died, यानी 3 months, was at the rate of 3624 per month. ये ड्रॉइंग्स कैपिटल में किस तरफ आता है रे? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट. अच्छा, क्या ड्रॉइंग्स का सेकंड इफेक्ट पीएनएल में जाता था? क्या ड्रॉइंग्स का सेकंड इफेक्ट पीएनएल में जाता था? नो. पीएनएल में नहीं जाता है ड्रॉइंग्स. एनीवेज, 3624 per month into 3 months he was alive. How much does this come to? 3624 into 3. 10,872. That's all. That's all. All points covered. Now close revaluation account. Credit side is more, 14,100. So that total we will write on the debit side also. And उसमें से फिर ये 2,100 जो है माइनस करेंगे. 14,100 minus 2,100 is 12,000.
Now tell me, this is profit on revaluation or loss on revaluation? Obviously, this will go to partners capital account. ये profit है या loss on revaluation? And revaluation का profit हो या loss हो, always distributed in which ratio? Old profit sharing ratio. Baba and Chacha. What is the old ratio? 7, 5, 4. 7 is to 5 is to 4. यानी 7 by 16, 5 by 16. Four by 16. ओके, और चाचा का चाचा के अकाउंट में डाल देता हूँ नीचे. सेकंड इफेक्ट. Now, what is the total here? Yes, 160,375. And from that, when you deduct this 10,872, how much do you get? अरे टोटल किया क्रेडिट का और उसमें से फिर ये डेबिट लेस करना है, तो हाउ मच इज द डिफरेंस? Okay, now Chacha has died. So whatever is the amount due to Chacha will be, look here, will be payable to his executors. Chalo, copy. Question 3, retirement or death of partner.
Fast. Done.
Is this done? Vanchit, is this much over? Yeah. Working note, fast. Be quick with the working note. चलिए, moving ahead. So, Kamala, Mrunmayee, and Nikita were partners sharing profits and losses. Again, the same ratio, 754. And they have the following balance sheet on 31st March 2011. Now, building machinery, furniture, stock, debtors, bills, receivable. यहाँ तक किसी का भी अकाउंट बनने वाला है? No. तो डायरेक्टली सीधा कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट, असेट साइड. करेक्ट? What about cash at bank? Are you going to prepare cash bank account? Bank account, yes. So there you will show this as opening balance. Asset है तो which side? Debit side. Then you have profit and loss account. Tell me, asset side पर profit and loss account है. What does it represent? Asset side पर profit and loss account है. What does it represent? आओ
एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? पास्ट लॉसेस, पास्ट का लॉस है तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो ये पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ऑब्वियसली एसेट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच साइड? एसेट्स ऑलवेज गो ऑन द डेबिट साइड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, then come back to the liabilities side now. Bills payable, are you going to prepare bills payable account, creditors account, loan account? No. So then these will be shown where? Balance sheet liability side. Then comes reserve fund. Reserve fund represents what? Past profit. और ये पास्ट का प्रॉफिट है अगेन, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में डालेंगे। लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे, एंड बिकॉज पास्ट प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो। And then capital accounts. Are you going to prepare capital accounts? Yes. So there you will show this as opening balance. Liability is opening balance which side? Credit side. Markings done. Now this balance sheet was of what date? 31st March 11. Remember this. And then Mrunmai died on 1st October 11. After how many months? Balance sheet के बाद after how many months she died? She died after how many months? 6 months. Okay. Now following adjustments were agreed upon as per the deed. Stop. Goodwill is valued at 40,000 and deceased partner का जो share है of the profit up to the date of death, they are talking about 6 months. Correct. 6 महीने का जो profit will be calculated on the basis of the average of the preceding year's profit, which is 48,000. ठीक है. Then building and machinery rate to be valued नहीं, are to be valued at 40,000 and 8,500. Building and machinery. Mrunmai is entitled to a salary of 2750 per annum. Interest on capital to be allowed at 12% per annum. Drawings up to the date of death were 3450 per month, and goodwill is to be written off. पहले फर्म का गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल रेज होगा कौन से रेशियो में? ये रेज कौन से रेशियो में होता है? अंदर किन से रेशियो में आता है? गुडविल रेज कौन से रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो। एंड देन नीचे लिखा है राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करना मतलब बाहर कौन से रेशियो में लेके जाना है? न्यू रेशियो। कळलं? प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर मिनिमाइज डेथ। चलो जल्दी स्टार्ट ड्राइंग लाइंस।
Ready? Now, Kamla, Mrinmay, Nikita. Old ratio is 7:5:4 and new ratio दिया ही नहीं है. Now who has died? Mrinmay has died ना, तो Mrinmay को हटा दो. क्या बचेगा? 7 बचेगा and 4 बचेगा. तो new ratio is 7:4. Now look here. The profit is 48,000. Average profit is 48,000. But अपने को 6 months का profit चाहिए. That is 24,000. और इसमें भी हमको मृण्मयी का शेयर चाहिए because only she has died. 5/16. 7,500. Copied. Now proceed fast. सबसे पहले बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. ये सारा सीधा सीधा न्यू बैलेंस शीट. बट वेट, उसमें से बिल्डिंग एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट है. सो यू हैव टू कीप देम इन द इनर कॉलम. ठीक है. लिहिणं झालं का? देन कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस 8,500. And profit and loss account partners capital debit side. Old ratio
ठीक है, तो वो 3200 है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। Then liability side, bills payable, creditors and loan. Bills payable, creditors, loan. $7,000, $11,000, $10,300. Then reserve fund, PCC, old ratio, 6,400. You will have to leave opening balance के लिए one line. And then opening balance of capital, 22, 12, 16. That's all. Now goodwill is 40,000. पहले हम goodwill raise करेंगे. ओल्ड रेशियो में गुडविल अंदर लेके आ रहे, कम्स इन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो. $40,000 in the old ratio. Old ratio is 7/16, 5/16, 4/16. So 40,000 raised. Then what? Deceased partner share of profit, उसको हमने कैलकुलेट करके रखा है इधर. मृण्मयी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 7,500. वो हमको उसको देने का है, देने का है तो इट्स देने का है, तो वो किराया बन गए, क्रेडिटर बन गए, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट. एंड इफ यू रिमेंबर, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करना है. मृण्मयी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज हाउ मच, 7,500 वर्किंग नोट. Now, what about the second effect of P&L? That will come here. Profit and loss suspense account. Share of profit 7,500. So the first point is over. Then building revalued at 40, machinery 8,500. Hello, building का नया value is 40,000 and machinery का 8,500. Hello, building का old value was 30,000, now it is 40,000. So increase in the value. एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट होता है कि लॉस? एसेट का वैल्यू इंक्रीज, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो ये तो प्रॉफिट है. प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट. एंड मशीनरी में देखो 10,000 था, वैल्यू हैज गॉन डाउन.
यहाँ डेप्रीशिएशन है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एंड एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो इट्स अ लॉस, लॉस तो रिवैल्यूएशन डेबिट। देन मिडमय इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, हमको उसको सैलरी देना है 2750 पर एनम, बट हम वो तो पूरे साल जिंदा ही नहीं थी, वो तो सिर्फ 6 मंथ तक ही वॉज अलाइव। ये तो पर एनम यानी साल का 2750 है, अपने को उसको 6 महीने का ही सैलरी देने का है, देने का है, तो शी बिकम्स क्रेडिटर, उसको क्रेडिट। एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ सैलरी इज पीएनएल डेबिट, बस साल के बीच में पीएनएल नहीं बनता, पर एनम था वो, तो 6 महीने का कितना, वन 1375। Second effect here, balance sheet. Next, interest also has to be given on capital 12% per annum. तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी पे करेंगे 12%। एक मिनट, तीनों पार्टनर को देना है कि सिर्फ उसको ही देना है, मृणमयी को? बाकी के दो पार्टनर्स तो जिंदा है ना, तो उनको साल के एंड में देंगे ना, फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि अभी तीनों को दे दे 6-6 महीने का, बाद में बाकी का 6 महीने का बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पीएनएल डेबिट पे आता है, एंड साल के बीच में पीएनएल डेबिट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at what rate? 12% per annum for 6 months. Now look here. Capitals are 22, 12 and 16. The 12% for 6 months. Interest on capital. 1320, 720 and 960. And total 3000. Then minimize drawings.
per month 3450. Per month 3450 into 6 months. कितना हो रहा है वो? 20,700. पैसा लेके गए ना, पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट. Now goodwill to be written off. न्यू रेशियो में 40,000 गुडविल है. न्यू रेशियो इज टेरेबल. 7:4 यानी 11 हो रहा है. 7/11, 4/11. 40,000 into 7/11. And 4/11. That's all. Now close the revaluation account. Credit side 10,000. Difference is 8,500. Now, wait.
I've just closed revaluation account, which is profit loss adjustment account. But आप में से majority का लिखना बाकी है, and it's already time up 8:30. So we will continue next time, close all these things, and you will copy next time. Okay, bye bye. See you. Take care.